जय हिंद। आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जेनेटिक्स साइटोजेनेटिक्स का, दैट इज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर क्रोमोसोम में, नॉर्मल क्रोमोसोम में कुछ वेरिएशन होता है या चेंजेस होती हैं, दैट मे बी स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल, दैट मे लीड टू सम abnormalities और some genetic differences, है ना। नॉट ओनली एबनॉर्मेलिटीज, कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस भी होती हैं, लेकिन इन चेंजेस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं क्रोमोसोम में, स्ट्रक्चर में या न्यूमेरिकल में, इनको हम जनरली क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं, है ना, चेंज होना। द सोमैटिक, यू नो दैट कि सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज 2n एंड जेनेटिक N chromosomes number of a species ordinary remain constant and means haploid. 2n and n. So this is due to extremely precise mitotic and meiotic cell division. So we have already studied about mitosis and meiosis. Mitosis leads to somatic development or growth, you can say, and meiotic cell division leads to the generation of gametes, है ना? So gametogenesis. So meiosis in the reproductive cells and mitosis in the somatic cell circle. Somatic cells of a diploid species contain 2 copies of each chromosome, है ना? वो 2 copies होती हैं, हम लोगों ने already पढ़ा है, which we call as a homologous chromosomes. Then their gametes therefore contain only 1 copy of each chromosome. That is chromosome complement or 1 chromosome complement or genome. तो कम से कम इनके गैमेट्स में एक कंप्लीट कॉपी ऑफ जीनोम में पूरे होमोलोगस पेयर्स में से एक क्रोमोसोम जरूर होगा. Sometimes due to mutation or spontaneous variation in the chromosomal number or structure do arise in nature, है ना. कभी कभी क्या होता है कि म्यूटेशन की वजह से या स्पॉन्टेनियस क्रोमोसोम वेरिएशन की वजह से ये नंबर में वेरिएशन आ जाता है. ये वेरिएशन जनरली जो जीनोटाइप और जीनोम में अकर होता है, दैट अपीयर्स phenotypically, है ना, बाहर से एक्सप्रेस होता है. So these chromosomal aberrations may be grouped into 2 broad classes. इनको हम 2 classes में divide कर सकते हैं. These 2 classes are structural variations or structural aberrations, and second is numerical aberrations. तो 2 तरह की होती हैं ये चेंजेस. टुडे वी आर डीलिंग विद द स्ट्रक्चरल एबरेशन. संरचना में क्या परिवर्तन होता है? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वेरिएशन रिजल्ट्स फ्रॉम क्रोमोसोम ब्रेकेज, है ना. ये ब्रेकेज हो सकती है, टूटते हैं ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंड लीड्स टू द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर. ब्रोकन क्रोमोसोम टेंड टू रीजॉइन, है ना. जो ब्रेक हुआ है क्रोमोसोम वो जुड़ेगा बिकॉज ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी लाइकेज. इफ देयर इज मोर देन 1 ब्रेक एंड रीजॉइनिंग अकर एट रैंडम, है ना, एक ब्रेक हुआ और रीजॉइनिंग हुई तो कम चांसेस हैं वेरिएशन होने की, जो कि जनरल वेरिएशंस होती हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. तो एक ब्रेकेज होने पर कम चांसेस ऑफ वेरिएशन है, लेकिन अगर ये एक से ज्यादा प्लेसेस पे क्रोमोसोम ब्रेक करता है और रीजॉइन करता है और रैंडमली रीजॉइन कर ले, यानी कोई भी पार्ट कहीं जुड़ जाए, सीक्वेंस बदल जाए, है ना, एंड नॉट नेसेसरी विद द करेक्ट एंड. और ये भी जरूरी नहीं है कि जहां पहले जो एंड से यूनियन होना है उसकी जगह ना हो या दूसरे प्लेस पे हो जाए. दैट लीड्स टू स्ट्रक्चरल चेंजेस.
है ना. तो this results in the structural changes of chromosomes. Chromosome breakage is caused by different factors. Naturally, this phenomenon occurs. Already आपने crossing over phenomenon study कर लिया है. So that may be due to some factors like radiations. X-rays are very common for that. Some chemicals or mutagens are there, जो कि mutation में आप पढ़ेंगे, है ना, and can cause spontaneous changes. Now, what are different types of structural variations? Generally, 4 main types of structural variations occur in the chromosome. These are deletion, duplication, translocations, and inversions. As the name is indicating, deletion. What deletion suggests? डिलीट हो जाना. हम लोग ये टर्म तो यूजुअली डेली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. कोई व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज आया, यू मे डिलीट दैट, है ना, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं. तो डिलीट हो जाना. तो डिलीशन का मतलब है क्रोमोसोम में कहीं ब्रेकेज हुआ और ब्रेकेज होने के बाद एक से ज्यादा प्लेसेस पर तो कुछ पार्ट डिलीट हो गया, है ना, which is not present in normal chromosome now. So that causes structural variations. Duplication, है ना. तो duplication, the phenomenon we have dealt with this topic in so duplication suggests that double or duplicate हो जाना, कोई section of the chromosome becomes double, है ना. तो that causes duplication in one chromosome and maybe deletion in another chromosome simultaneously. Third is translocation. Translocate हो जाना, है ना, यानी कोई पार्ट का एक क्रोमोसोम की आर्म से दूसरी क्रोमोसोम की आर्म पर चले जाना, तो ट्रांसलोकेट हो गया. इन्वर्जन, उल्टा हो जाना, इन्वर्ट हो जाना, है ना, sequence becomes inverted. So these are the 4 processes which leads to structural variations. Now come to the first, that is deletion. है ना, carefully इसको समझेंगे. Deletion refers to loss of a portion of segment from the chromosome. It is known as deficiency, है ना, delete हो जाना या deficient हो जाना. Deletion have been observed in many plants and animal species, Drosophila, maize, tomato, wheat, and several other plant crops. Depending upon the location, deletions are of 2 types. ये 2 types क्या हैं? Terminal and interstitial deletion. और हम interstitial को और कैलोरी भी कहते हैं, है ना. तो कैलोरी का मतलब इन बीच, और इंटर कैलोरी भी कहा जा सकता है इसको. यू कैन सी हियर, ये एक साथ चारों प्रोसेसेस को शो कर दिया गया है. First is deletion. The normal chromosome consists of these loci of genes A, B, C, D, E, F. है ना? If from the normal chromosome D is deleted, D is not here, है ना? So this is deleted from the normal chromosome. Now the sequence has been changed to A, B, C, E, F. So this is deletion. Duplication A, B, C, D, E, F. है ना? So this is normal chromosome. If the 2 section means D and E becomes duplicated, may come from other chromosome.
after breakage and reunion. So this leads to the duplication or structural variation by duplication. Inversion. Inversion, the normal chromosome has the sequence A, B, C, D, E, F. Now DCB means this section has been inverted. So this is inversion. And this is one type of translocation, that is reciprocal translocation, means GH comes from another arm. One arm is A, B, C, D, E, F, and other is GH, I, J, K, L. Now GH comes with the D, E, F, and I, J, K, L comes to the first arm with A, B, C. So this is called as translocation or reciprocal, when both the homologous chromosomes exchange the segments. Now come to two types of deletion. The first is terminal deletion, the single break near the end of the chromosome. Terminal says end. तो एक क्रोमोसोम की एंड पर ब्रेकेज होना would be expected to result in terminal deficiency. तो जब टर्मिनल एंड पे हुआ और डिलीट हो गया, रिजॉइन नहीं किया, तब इसको हम टर्मिनल डेफिशिएंसी और टर्मिनल डिलीशन कहते हैं. Terminal deficiency might seem less complicated. Second is interstitial deletion. If two breaks occur, a section may be deleted. यानी जो बीच में हुआ, यानी क्रोमोसोम आर्म के एंड पे ना होकर के कहीं मिडवे, है ना, इंटरकैलरी और इंटरस्टिशियल, कहीं मिडवे दो ब्रेक हुए, है ना, टू ब्रेक्स occur, a section may be deleted or intercalary deficiency is created. But majority of deficiency detected are intercalary type with the chromosomes. इस टाइप की deficiencies ज़्यादा डिटेक्ट होती हैं. Now come to duplication. The term duplication was coined by Bridges in 1919, and the first duplication was described in Drosophila melanogaster. Types of duplication, broadly duplication are divided into two categories or two types. First is interchromosomal duplication, and second is intrachromosomal duplication. Interchromosomal means between the two chromosomes, or intra means within the same chromosome. You can see here, this is a normal chromosome having the sequence A, B, C, D, E, F, G, H, I. Then what happens in interchromosomal duplication? You can see here, the arm has been changed. So here duplication of EFG occurs in both the chromosomes, right? So this is called as interchromosomal duplication. This is first chromosome, this is second of homologous. A and B are homologous chromosomes. Now EFG also in A chromosome and B chromosome. So this is called interchromosomal duplication. The second type, intrachromosomal duplication, means within the same chromosome. You can see here, this EFG is placed in the same chromosome on both the arms. And this is centromeric unit, and both the arms consist of EFG and EFG unit. Similarly, D chromosomes also have this two sequences on the same arm, EFG and EFG. E chromosome also have on the same arm without any difference. यहाँ पर बीच में कुछ segment of chromosome with centromeric unit CD है, यहाँ केवल H है, यहाँ पर कोई नहीं है. Similar place पे 1 and 2 segments are duplicated. Similarly, here also in F. तो यहाँ पर duplication of these segments in the same chromosome called as intrachromosomal duplication.
So what is interchromosomal? The duplicated segment of a chromosome is present in another chromosome of the genome. Means it is of two types. The duplicated segment of a chromosome is incorporated into a non-homologous chromosome. यानी homologous में तो हो सकता है generally at the time of pairing, लेकिन कभी-कभी non-homologous में भी होता है. तो duplicated segment of a chromosome is included or incorporated into the non-homologous chromosome. The duplicated segment is present as a separate chromosome. Clearly, it most of the centromere to be able to survive. है ना? तो ये second में भी हो सकता है. What is intrachromosomal duplication? The duplicated segment remain in the same chromosome. It may be present at different occasions. And जो अभी हम लोगों ने diagrammatically देखा, that may be at 4 places, either on separate arms, on the same arm with a distance, having some segment in between, or without segment in between. है ना? In the other arm, in the same arm but removed from the original segment, in the same arm and next to the original segment, यानी original भी है और उसकी बगल में ही हो जाए duplication. This type of duplication is called tandem duplication. Now, what are the genetic effects of such type of variations in duplication? Majority of these small duplications have no phenotypic effect. है ना? However, they provide raw material for evolutionary changes. है ना? तो जनरली पहली जनरेशन में तो ज्यादा कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन सब्सिक्वेंट जनरेशंस में अगर ये डुप्लीकेशन चलता जाए तो ये जनरली अगर हाइट की जीन्स हो या हेल्थ की जीन्स हो, ग्रोथ और विगर की जीन्स हो, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा जियाड्स फॉर्म करेंगे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म कर सकती हैं. है ना? तो ये इवोल्यूशन के लिए एक हमें प्लेटफॉर्म देता है कि इवोल्यूशन हो सकता है. इसकी वजह से इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जीन फैमिलीज. अ जीन फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more genes that are similar to each other derived from common gene. Ancestor X globin gene family whose genes encode proteins that bind oxygen. तो ये gene families को rise करता है जिनमें ये phenotypic effects भी observe होने लगते हैं और साथ साथ उनमें metabolic changes भी होती हैं. जो third type का duplication है, that is tandem duplication, play a major role in evolution. है ना? जिसमें original segment के साथ ही duplicated segment हो, because it is easy to generate extra copies of duplicated genes through the process of unequal crossing over. These extra copies can then mutate to take on altered roles in the cell, or they can become pseudogenes. है ना? तो ये हो सकता है कि जो duplicated gene segment है pseudogenes की तरह से काम करे, inactive forms of the gene. They are not very active. है ना? So by mutation they may go for the evolutionary changes or helps in the process of evolution. So we have studied today about deletion and duplication. Thank you for listening. Tomorrow I'll go for other 2 parts, translocation and inversion. I have to go to college because college is open. So see you tomorrow. Jai Hind.